जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिता अथ सप्तमोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच सुप्ते नारायणे देवे नाभो पङ्कजमुत्तमम् आविर्बभूव सहसा बृहद्वै शङ्करेच्छया अनन्तयष्ठिकायुक्तं कर्णिकारसमप्रभम् अनन्तयोजनया ममन्तो तोच्छ्राय संयुतं कोटिसूर्यप्रतीकाक्षं सुन्दरं तत्त्वसंयुतम् अत्यद्भुतं महारम्यं दर्शनीयममुत्तमं कृत्वा यत्नं पूर्ववत्स शङ्कर परमेश्वर दक्षिणाङ्गानि जान्मावै साम्भव शम्भुरजिजनत् स मायामोहितं कृत्वा मां महेशो द्रुतं मुने तन्नाभिपङ्कजादार्विर्भावयामास लीलया एवं पद्मा ततो जज्ञे पुत्रोऽहं हेमगर्भक चतुर्मुखो रक्तवर्णस्त्रीपुण्ड्राकितमस्तक तन्मायामोहितश्वाहं नाविदं कमलं विना स्वदेहजनकं तात पितरं ज्ञानदुर्बल कोऽहं वा कुत आयात किं कार्यतु मदीयकं कस्य पुत्रोऽहमुत्तमन् केनैव निर्मितोऽधुना इति संशयमापन्न बुद्धिर्मा समपद्मत किमर्थं मोहमायामि तज्ज्ञानं सुकरं खलु एतत्कमलपुष्पस्य पत्रारोहस्थलं ह्यद मत्कर्ता च स वै तत्र भविष्यति न संशय इति बुद्धिं समास्थाय कमलादवरोहयं नाले नाले गतस्तत्र वर्षाणां शतकं मुने न लब्धं तु मया तत्र कमलस्थानमुत्तमं संशयं च पुनः प्राप्त कमले गन्तुमुत्सुक आरुहोहाथ कमलं नालमार्गेण वै मुने कुमलं कमलस्याथ लब्धवात्र विमोहित नालमार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततस्तिष्ठ विमोहित तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमाशुभा शिवेच्छया परा व्योम्नो मोहविध्वसनी मुने तच्छ्रुत्वा व्योमवचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नत पुनस्तप्तं तपोघोरं द्रष्टुं स्वजनकं तदा हि भगवान् विष्णु स्वतुर्बाहुसुलेचन मय्येवानुग्रहं कर्तुं धृतमाविर्बभूवः शङ्खचक्रायुधकरो गदापङ्कपद्मधरपर घनश्याम सर्वाङ्गं पीताम्बरधरः पर मुकुटादिमहाभूष प्रसन्नमुखपङ्कज कोटिकन्दर्पसङ्काश सन्दृष्टो मोहितेन स तद्दृष्ट्वा सुन्दरं रूपं विस्मयं परमं गत कालाभं काञ्चनाभं च सर्वात्मानं चतुर्भुजं तथा भूतमहं दृष्ट्वा सदसन्मयमात्मना नारायणं महाबाहुं हर्षितो ह्यभवं तदा मायया मोहितः शम्भोस्तदा लीलात्मनः प्रभो अविज्ञाय स्वजनकं तमवोचं प्रहर्षित ब्रह्म उवाच कस्त्वं वदेति हस्तेन समुत्थाप्य सनातनं तदा हस्तप्रहारेण तीव्रेण सुदृढेन तु प्रबुद्धयोत्थाय शयनात्सम् आसीन क्षणं वशी
तदर्शनिन्द्रा विकल्लिन्न निरजामललोचन मामत्र संस्थितं भासात् यासितो भगवान् हरि आह चोत्थाय ब्रह्माणं हसन्मां मधुरं सकृत् विष्णुवाच स्वागतं स्वागतं वत्स पितामह महादूते निर्भयो भव दास्येऽहं सर्वान् कामान् न संशय तस्य तद्वचनं श्रुत्वा स्मितपूर्वसुरर्षभ रजसा बद्धवैरश्च तमवोचं जनार्दनं ब्रह्म उवाच भाषसे वत्सेति सर्वसंहारकारणं मामिहाति स्मितं कृत्वा गुरुशिष्यमिवानध कर्तारं जगतां साक्षात् प्रकृतेश्च प्रवर्तकं सनातनमजं विष्णुं विरिञ्चिं विष्णुसम्भवं विश्वात्मानं विधातारं धातारं पङ्कजेक्षणं किमर्थं भाषसे मोहात् वक्तुमर्हसि सत्वरं वेदो मां वक्ति नियमात्स वयम्भुवमजं विभुं पितामहं स्वराजं च परमेष्ठिन उत्तमम् इत्याकर्ण्य हरिवाक्यं मम क्रुद्धो रमापति सोऽपि मामाह जाने त्वां कर्तारमिति लोकत विष्णुवाच कर्तुं धर्तुं भवान् गादव तीर्णो ममाव्ययातः विस्मृतोऽसि जगन्नाथं नारायणमनामयं पुरुषं परमात्मानं पुरुहत्तं पुरुष्ठुतं विष्णुमच्युतमीशानं विश्वस्य प्रभवोद्भवं नारायणं महाबाहुं सर्वव्यापकमीश्वरं मन्नाभिपद्मतत्त्वं हि प्रसूतो नात्र संशय तवापराधो नात्सत्य त्वयि माया कृतं मम शृणु सत्यं चतुर्वक्त्र सर्वदेवेश्वरो ह्ययं कर्ता हर्ता च भर्ता च न मयास्ति समो विभु अहमेव परं ब्रह्म परं तत्त्वं पितामह अहमेव परं ज्योति परमात्मा त्वहं विभु अद्य दृष्टं श्रुतं सर्वं जगत्यस्मिच्चराचरं ततद्विद्विचतुर्वक्त्र सर्वमन्मयमित्यथ मया सृष्टं पुरा व्यक्तं चतुर्विंशतितत्त्वकं नित्यं तेष्वणवो बद्ध्वा सृष्टा क्रोधभयादय प्रभावाच्च भवानङ्ग्यान् अन्ते कानिह लीलया सृष्ट्वा बुद्धिर्मया तस्यां हङ्कारस्त्रिधा तत तन्मात्रं पञ्चकं तस्मान् मनोदेहेन्द्रियाणि च आकाशादीनि भूतानि भौतिकानि च लीलया इति बुद्धत्वा प्रजानाथ शरणं व्रज मे विदे अहं त्वां सर्वदुःखेभ्यो रक्षिष्यामि न संशय ब्रह्म उवाच इति श्रुत्वा वचस्तस्य ब्रह्मा क्रोधसमन्वित को वा त्वमिति संवत्स्याद्भुवं माया विमोहित किमर्थं भाषसे भूरि बहनर्थकरं वच नेश्वरस्त्वपरं ब्रह्मा कश्चित् कार्ता भवेत् तव मायया मोहितश्वाहं युद्धं चक्रे सुदारुणं हरिणा तेन वै साध्वं शङ्करस्य महाप्रभो एवं मम हरिश्वासित् सङ्गरो रोमहर्षण प्रलयार्णवमध्ये तु रजसा बध्ववैरयो एतस्मिन्नन्तरे लिङ्गं भवञ्चाख्यो भवच्चावयोः पुरा विवादशमनार्थ हि प्रबोधार्थ तथा वयो ज्वालामाला सहस्राढ्यं
कालानलशतोपमं क्षयवृद्धिविनिर्मुक्त मादिमध्यान्तवर्जितम् अनौपम्यमनिर्देश्यमव्यक्तं विश्वसम्भवम् तस्य ज्वालासहस्रेण मोहितो भगवान् हरि मोहितं चाहमामत्र किमर्थं स्पर्ध्वसेऽधुना आगतस्तु तृतीयोऽत्र तिष्ठतां युद्धमावयो कृत एवात्र सम्भूत परीक्षावोऽग्निसम्भवम् अद्यो गमिष्याम्यनलस्यानुपमस्य च परीक्षार्थं प्रजानाथ तस्य वै वायुवेगत भवानूर्ध्वप्रयत्नेन गन्तुमर्हसि सत्वरं ब्रह्म उवाच एवं व्याहत्य विश्वात्मा स्वरूपमकरो तदा वायाहमप्याशुं हंस्त्वं प्राप्तवान् मुने तदा प्रभूतिमाहुर्हस हंसो बिराडिति हंस हंसेति यो ब्रूयात् हंसोऽथ भविष्यति शुश्वेतो ह्यनलप्रख्यो विश्वतः पक्षसंयुत मनोनीलजवो भूत्वा गतोर्ध्वं चोर्ध्वतः पुरा नारायणोऽपि वश्वात्मा सुश्वेतो ह्यभवत्तदा दशयोजनविस्तीर्णं शतयोजनमायतं मेरुपर्वतवश्माणं घोरतीक्ष्णोग्रदन्दृष्टं कालादित्य-समाभासं दीर्घकोणं महास्वनतं ह्यस्वपादं विचित्राङ्गं चैत्रं दृढमनोपमं व्याराहाकारमास्थाय गतबास्तदधो जवात् एवं वर्षः सहस्रं च चरन् विष्णुरुधो गत सदा प्रभूतिलोकेषु श्वेतवाराहसंज्ञक कल्पो बभूव देवर्षे नाराणां कालसंज्ञक बभ्राम बहुधा विष्णु प्रभविष्णुरधो गत नापश्यदल्पमप्यस्य मूलं लिङ्गस्य सूकर तावत्कालं गतश्चोर्ध्वमहमप्यरिसूदन सत्वरं सर्वयत्नेन तस्यान्तं ज्ञातुमिच्छया श्रान्तो न दृष्ट्वा तस्यान्तमहं कालादगोद्गत तथैव भगवान् विष्णु श्रान्तकमललोचन सर्वदेवेनिभस्तूर्ण मुक्तिर्थित स महावपु समागतो मया सार्ध्वं प्रणिपत्य भवं मुहुः मामया मोहितः शम्भोस्तथो संविग्रमानस पृष्ठतः पार्श्वतश्चैव यग्रतः परमेश्वरं प्रणिपत्य मया सार्ध्वं सस्मार किमिदन्त्विक्ति अनिर्देश्यं च तद्रूपं नामकर्मवर्जितम् अलिङ्गं लिङ्गतां प्राप्त्यं ध्यानमार्गेऽप्यगोचरं स्वस्थं चित्तं तथा कृत्वा नमस्कारपरायणो बभूव तुरुभावामाम् अहं करीरपि ध्रुवं जानीवो नहि ते रूपं योऽसि महाप्रभो नमोऽस्तु ते महेशान रूपं दर्शयनो त्वरम् एवं शरच्यतान्यासन् मस्कारं प्रक्रुवर्तो अवयोर्मुनिशार्दूल मदमास्थितयोस्तदा इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां प्रथमखण्डे सृष्टयूपाख्याने विष्णुब्रह्मविवादवर्णनं नाम 7मोऽध्यायः। जय गुरुजी।